Welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Vahur. Now dear student, today we are going to start the new lesson, new topic from paper 2nd, and that is belongs to GOC, General Organic Chemistry, and the name of topic is alcohol, phenol and ether. Our today's point is alcohol, phenol and ether. Actually this topic based on 3 organic compound. One is your alcohol, second one is your phenol, and last concept related to ether. And one by one we will try to cover all points. What is alcohol? Classification of alcohol, its IUPAC nomenclature, common system. Then what is phenol? Classification of phenol, preparation of phenol and chemical properties. And then come to last point, that is ether. What is ether? Classification of ether and preparation of ether. Now in detail, in various steps, in various video lectures, we will try to cover this point, alcohol, phenol and ether. Now student, before going to start this point, alcohol, phenol and ether, let me discuss one point, and that is most important concept, and that is necessary to discuss here. What is the mean functional group? यहाँ से अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे. इन 11th स्टैंडर्ड ये आपका पार्ट हुआ है. व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? नाउ एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप मीन्स वी कैन से द कैरेक्टरिस्टिक or identity of organic compounds. Functional group, it is the characteristic or identity of organic compounds. Now for example, I am writing here CH2 double bond CH2. I have written here CH2 double bond CH2. Okay, and now I am asking which compound is this, and I am giving 4 options. One is your alkane, second alkene, third alkyne and fourth benzene. मैंने क्या क्वेश्चन किया आपको कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है या बेंजीन है? डेफिनेटली यू विल से सर दिस कंपाउंड इज अल्कीन. क्या बोलेंगे आप? ये कंपाउंड अल्कीन. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज अल्कीन, व्हाई नॉट अल्केन, why not alkyne? You will say sir carbon carbon double bond. So by looking to this carbon carbon double bond, we are saying the given compound is alkene. So this carbon carbon double bond is the identity of alkene. जैसे मैं डबल बॉन्ड देखूंगा, definitely we will say the given compound is alkene. Now this identity, this characteristic, it is called as functional group. So what is the functional group of alkene? Carbon carbon double bond. What is functional group of alkyne? Carbon carbon triple bond. Likewise, we are going to start our today's lecture. What is functional group? Now functional group means we can say the characteristic, the identity of organic compound by which the organic compound can be known, and that group is called as a functional group. Now our today's part is alcohol. Alcohol. Now what is the functional group of alcohol? So we can say the functional group of alcohol and phenol, it is hydroxyl group, OH. Alcohol functional group is OH, phenol functional group is OH, but there is a slightly difference between functional group of alcohol and phenol. In alcohol, hydroxyl group attached to aliphatic compounds, or we can say alkyl group. Hydroxyl group attached to alkyl group, and in case of phenol, hydroxyl group attached to AR means aromatic nucleus. कहाँ अटैच रहता है वो? एरोमेटिक न्यूक्लियस. एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन से अल्कोहल्स आर एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड. अल्कोहल को क्या बोलूंगा मैं? एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड. एंड फेनॉल्स आर एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड. Phenols are aromatic hydroxyl compound. Now why I am saying aliphatic, why I am saying aromatic, एकदम डिटेल में we will try to cover in this topic. Now the first part of your topic I am going to start, that is alcohol. अब मैं आपके टॉपिक का पहला पार्ट स्टार्ट करता हूं, that is alcohol. Okay.
Now, how to define alcohol? Alcohols are organic compounds. What is your alcohol? Alcohols are organic compound whose molecule contain hydroxyl group. Alcohols are organic compounds. How to define alcohol? Alcohols are organic compound, okay, whose molecule contain organic compounds whose molecule contain hydroxyl group. Whose molecule contain hydroxyl group. अब hydroxyl group means OH. Whose molecule contain hydroxyl group attached to or bonded to saturated carbon atom. Hydroxyl group attached to or bonded to saturated carbon atom, and such compounds are called as alcohol. Example में मैं explain करूँगा, हम एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज योर अल्कोहल? अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड whose molecule contain hydroxyl group OH bonded to attached to saturated carbon atom, and such compounds are called as alcohol. For example, I am writing here CCOH. Now OH means definitely this one is your hydroxyl group, alcohol, and now this carbon is called as saturated carbon. अब मैं इसको saturated carbon क्यों बोलूँगा? Because all valency satisfied by single bond. ऑल वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, मतलब वो कार्बन को चारों जो बॉन्ड अटैच रहेंगे वो क्या अटैच रहेंगे? सिंगल बॉन्ड अटैच रहेंगे. एंड दिस कार्बन इज सैचुरेटेड कार्बन, एंड दिस अल्कोहल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्कोहल. तो स्टूडेंट लिख सकते हैं अल्कोहल का डेफिनेशन. अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड whose molecule contain hydroxyl group OH group attached to bonded to saturated carbon atom, and these organic molecules or compounds are called as alcohol. Now hydroxyl group can also attach to aromatic ring. Hydroxyl group can also attach to aromatic ring, and based on that we can say alcohols are, hydroxyl compounds are of two types. Now hydroxyl group can also present attach to aromatic ring, and based on we can say there are two types of hydroxyl group. One is your aromatic hydroxyl group, aromatic compound, and second one is your aromatic alcohol, aromatic compound, and second one is your aromatic alcohol. Actually this aromatic compound, better way we can say it is a phenol. It is a phenol. Now the hydroxyl group can also attach to aromatic ring or aromatic side chain, and based on this we can classify hydroxyl compounds are of two types. एक है आपका phenol and second one is your aromatic alcohol. कौन से बेस पर मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ यहाँ पर hydroxyl compound को? based on hydroxyl group directly bonded to aromatic compound या aromatic ring, और hydroxyl group attached to side chain of aromatic compound. For example, I am writing here benzene ring. You know, everyone knows the benzene ring. Now C6H6, this one is your benzene ring. ये क्या का स्ट्रक्चर हो गया आपका? बेंजीन रिंग. नाउ इन दिस केस डायरेक्टली आई एम गोइंग टू अटैच OH हेयर. मैंने डायरेक्टली यहां क्या अटैच किया? OH. नाउ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू कहां अटैच किया उसको मैंने? एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक न्यूक्लियाई, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ फेनॉल. तो अपन क्या बोलेंगे? फेनॉल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू या अटैच टू बेंजीन लाइक न्यूक्लियस और बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर या एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंड these compounds are called as a phenol. लिख सकते हैं. तो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड क्लासिफाइड एज अ फेनॉल, एंड सेकंड इट इज क्लासिफाइड एज एरोमेटिक अल्कोहल. अब मैं एरोमेटिक अल्कोहल किसको बोलूंगा?
फेनॉल तो आपको समझ में आ गया। फेनॉल किसको बोलेंगे अपन कि जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH डायरेक्टली किसको अटैच रहेगा, बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, नेप्थलीन। नाउ नेप्थलीन व्हेन टू बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड टुगेदर, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन। ये क्या, ये काय का स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन। अब मैं नेप्थलीन में क्या करता, फर्स्ट पोजीशन पर OH अटैच करता, तो नाउ हियर इट इज कन्वर्ट इनटू नेप्थॉल। काय में कन्वर्ट हो जाएगा ये, इट इज कन्वर्ट इनटू नेप्थॉल एंड दिस पोजीशन इज फर्स्ट पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड एज अल्फा नेप्थॉल। क्या इसको बोलेंगे अपन, इसको अल्फा नेप्थॉल। इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ फेनॉल, ये भी काय के एग्जांपल रहेगा, इट इज द एग्जांपल ऑफ फेनॉल। नाउ व्हाट इज एरोमेटिक अल्कोहल? अब एरोमेटिक अल्कोहल अपन किसको बोलेंगे, सो व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू साइड चेन, व्हेन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू साइड चेन विच इज अटैच टू या विच इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, which is the part of aromatic ring. When hydroxyl group attached to side chain which is attached to which is the part of aromatic ring, such organic compounds, hydroxyl containing compounds, are called as aromatic alcohol. For example, I have written here benzene ring. See, this one is your aromatic compound. Here CH2, this is the side chain, and to that CH2 attached there OH. Now hydroxyl group OH attached to side chain which is the part of which is attached to, अब ये side chain मतलब ये CH2 किसको attached है, ये aromatic compound को, बेंजीन को। किसको attached है, aromatic compound या बेंजीन, and such alcohols are called as aromatic alcohol। तो स्टूडेंट आपको एरोमेटिक अल्कोहल समझ में आ रहा है, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप attached to side chain which is attached to aromatic ring or aromatic compound is called as aromatic alcohol, and this alcohol is known as benzylic alcohol। अब ये अल्कोहल को व्हाट वी विल कॉल, हम लोग क्या बोलेंगे ये अल्कोहल को, बेंजाइलिक अल्कोहल। एक्चुअली दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजीन रिंग और उस पर अगर CH2 अटैच्ड रहा तो ये पोजीशन को मैं क्या बोलूंगा, बेंजाइलिक पोजीशन, एंड OH इज अटैच्ड, सो इट इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक अल्कोहल। सपोज Cl इज देयर, बेंजाइलिक क्लोराइड। OH की जगह अगर मैंने Br लिया, बाकी मेरा कंपाउंड सेम है, दैट इज कॉल्ड एज योर बेंजाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक ब्रोमाइड एंड सो ऑन। ओके, सो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एरोमेटिक अल्कोहल। नाउ स्टूडेंट, दिस इज general introduction of your topic, that is alcohol and phenol. Let me discuss ether also. So let me revise all this point. What is alcohol? How to define the alcohol? Alcohols are organic compound whose molecule contain hydroxyl group attached to या bonded to saturated carbon atom, and such organic compounds or molecules are called as alcohol. Now then hydroxyl group can also present या attach directly to benzene ring, aromatic compounds. Instead of benzene ring we can say aromatic compound, or that hydroxyl group may attach to side chain which is the part of which is attached to aromatic ring, and based on these alcohols are of two types. One is your phenol, hydroxyl compounds are of two types. One is your phenol and second one is your aromatic alcohol. And अपन phenol किसको बोलेंगे? What is phenol? When hydroxyl group OH directly attached to aromatic ring, say बेंजीन रिंग, नेप्थलीन, अगर OH बेंजीन रिंग को अटैच रहा, दिस इज कॉल्ड एज फेनॉल. इफ OH अटैच टू नेप्थलीन, इट इज कॉल्ड एज अल्फा नेप्थॉल. एंड नेक्स्ट पार्ट इज योर एरोमेटिक अल्कोहल. नाउ विद इन 2 minutes वी विल डिस्कस व्हाट इज ईथर, और उसके बाद अपन ओनली वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर. सो होप सबको अल्कोहल समझ में आया होगा. ओके, सो आर यू एबल टू राइट?
pause your video and note down every point. So what is alcohol, what is phenol, okay, what is aromatic alcohol, what is the structure of alpha naphthol, write the structure of beta naphthol also. Now I am going to start next definition, that is ether. अब देखो how to define the ether. अब ether define करने से पहले we will see what is the functional group of ether and general structure of ether. अब अगर आप लोग 11 का पार्ट याद होगा, now general functional group of ether is bond O bond. General functional group of ether is bond O bond, and its general structure is ROR, or we can say ARO AR, or we can say ROAR. Now here R means alkyl group. R क्या इंडिकेट करता है? R means alkyl group, से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एंड AR इंडिकेट करता है एरोमेटिक रिंग. AR क्या इंडिकेट करेगा? एरोमेटिक कंपाउंड, और इट इंडिकेट्स एरोमेटिक रिंग. नाउ दिस इज अ जनरल फंक्शनल ग्रुप एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ईथर. अब वैसे तो ईथर के अलग अलग डेफिनेशन है, ईथर्स के अलग अलग डेफिनेशन है. सम यूज्ड टू से ईथर्स आर इपॉक्साइड्स ऑफ अल्कोहल. ईथर क्या है? ईथर्स आर इपॉक्साइड ऑफ अल्कोहल. सम यूज्ड टू से ईथर्स आर अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल. Ethers are epoxide of alcohol, or some people used to say ethers are anhydrides of alcohol. Actually, how to define the ethers? Now, ethers are the compound. Ethers are the compound in which an oxygen atom. Ethers are the compound in which an oxygen atom attached to alkyl group. Two alkyl group attached to two aryl group, or attached to one alkyl group or one aryl group, and such compounds are called as, ये compounds को मैं क्या बोलूँगा? ether. Now such compounds are called as a ether. So कैसा लिखेंगे definition ethers का? Ethers are organic compound in which एन ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम किसको अटैच रहेगा? ऑक्सीजन एटम अटैच टू टू अल्किल ग्रुप. ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या अटैच रहेंगे? अल्किल ग्रुप. टू एरिल ग्रुप, वन अल्किल ग्रुप और वन एरिल ग्रुप, एंड सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ईथर. Okay, now here R means alkyl group. For example, I am writing here CH3 single bond O CH3. Now this is your oxygen. अब oxygen के दोनों तरफ क्या attached है? alkyl group, that is your methyl. It is the example of ether. Now you can write here CH3 single bond O single bond AR, say benzene ring. It is the example of your ईथर. ये भी क्या का एग्जाम्पल हो गया आपका? ईथर. सो व्हाट इज ईथर? कैसे डिफाइन करेंगे अपन ईथर? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एन ऑक्सीजन एटम अटैच टू टू अल्किल ग्रुप, टू एरिल ग्रुप, और one alkyl and one aryl group. So dear student, this is all about introductory part and definition of your topic alcohol, phenol and ether. Okay, so let me revise within 1 minute what is alcohol, what is phenol, what is ether, और फिर अपन स्टडी करेंगे तीनों का क्लासिफिकेशन एंड वी विल स्टॉप हियर. ओके, नाउ इन केस ऑफ डेफिनेशन, अल्कोहल्स का डेफिनेशन क्या आएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू सैचुरेटेड कार्बन एटम. What is phenol? Phenols are hydroxyl, aromatic hydroxyl compound in which hydroxyl group directly attached to aromatic ring, say benzene, naphthalene. What is aromatic alcohol? The compound in which hydroxyl group attached to side chain, which is attached to aromatic ring. Okay, and what is your ethers? Ethers are organic compound in which oxygen atom attached to two alkyl group, one alkyl, one aryl group, or it attached to two aryl group, and this is the definition of your alcohol, phenol and ether. Now next part, and that is most important concept
we are going to discuss, and one may question arise based on this concept. Now I am going to start classification of alcohol and phenol. We are going to discuss classification of alcohol and phenol. Classification of alcohol and phenol, and then we will see the classification of ether. First we will see how alcohols are classified. Classification of alcohol and phenol. अब देखो, एक्चुअली अल्कोहल तो आपको समझ में आ गया, एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, जहां भी OH रहा और एलिफेटिक कंपाउंड्स रहा दैट इज अल्कोहल, OH एंड एरोमेटिक कंपाउंड रहा दैट इज योर फेनॉल, आपको पता है. नाउ क्लासिफिकेशन में अपन स्टार्ट करेंगे हाउ अल्कोहल एंड फेनॉल्स आर क्लासिफाइड. नाउ फर्स्ट क्लासिफिकेशन रहता है उनका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट. हाउ मैं बताऊंगा एग्जांपल में, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन a given compound या present in a given molecule, present in a given compound or present in a given molecule. For example, I am writing here CH3 CH2OH, एक example. Now second one CH3 CH2 single bond CH2 single bond OH. Third example I am writing here CH2 CH2 single bond OH single bond OH single bond OH. Now I have written this three structure. मैंने यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर लिखा. One is your CH3 CH2 OH. Second one is your CH2 single bond OH. Third one is your CH2 single bond OH, CH single bond OH, CH2 single bond OH. And now my question, in first example how many hydroxyl groups are present? अब पहले एग्जांपल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? You will say sir 1. Now कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 1. Now in second case how many hydroxyl groups are present? 2. In third case how many hydroxyl groups are present? 3. Now based on number of hydroxyl group present, alcohols are classified as first मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. पहला क्या हो जाता है आपका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. नाउ सेकंड वन इज योर डाइहाइड्रिक अल्कोहल. हाइड्रा वाटर से बनता. थर्ड वन इज योर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. थर्ड क्या हो गया आप लोगों का? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. और वी कैन से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, और वी कैन से हियर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल्स कितने टाइप में क्लासिफाइड हो रहा है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. व्हाट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? द अल्कोहल विच कंटेन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स. ऐसा अल्कोहल जिसके कंपाउंड में या मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे? 1. एंड दैट अल्कोहल इज कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. व्हाट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल? द अल्कोहल विच कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे उसमें? 2. दैट इज कॉल्ड एज योर डाइहाइड्रिक अल्कोहल. व्हाट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल? What is trihydrate alcohol? The alcohol which contain 3 hydroxyl group in their molecule. The alcohol which contain 3 hydroxyl group in their molecule is called as trihydrate alcohol. अब what is polyhydric alcohol? What is polyhydric alcohol? The alcohol which contain more than 1 hydroxyl group in their molecule. Poly मतलब many, वहां पर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे. More than 1 hydroxyl group in their molecule is called as polyhydric alcohol. So this is the first classification of alcohol. आप लोगों को समझ में आ रहा है? What is monohydric alcohol? जिसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे? 1. What is dihydric alcohol? Which contain 2 hydroxyl group. What is trihydric alcohol? Which contain 3 hydroxyl group. And this is the classification of alcohol based on number of hydroxyl group present. अब वैसे आपका क्लासिफिकेशन आएगा फेनॉल का. Now one is your monohydric phenol. Now which contain 1 hydroxyl group.
One is your dihydric phenol. Now, what is dihydric phenol? Which contain 2 hydroxyl group in their molecule. यहाँ मेरा aliphatic compound था, यहाँ मैंने aromatic compound लिया. Now, trihydric phenol. What is your trihydric phenol? मतलब बेंजीन रिंग को कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड रहेंगे इधर? 3. Now, so based on number of hydroxyl group present, the alcohols are classified as monohydric alcohol, dihydric alcohol, trihydric alcohol, polyhydric alcohol, and phenol also classified as monohydric phenol. मतलब aromatic ring को कितने hydroxyl group attached रहेंगे? 1. Dihydric phenol, 2 hydroxyl group attached to aromatic ring. Trihydric phenol, 3 hydroxyl group attached to aromatic ring. So this is the classification of alcohol and phenol. तो स्टूडेंट पहला क्लासिफिकेशन अपने कवर किए based on number of hydroxyl group attached or number of hydroxyl group present. Okay, now out of this, in brief we have to discuss what is monohydric alcohol and how it is classified. in detail अपन स्टडी करेंगे. होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा. पॉज योर वीडियो एंड ओके, pause your video and note down all points. The classification of alcohol and phenols. Okay, your concept is classification of alcohol and phenol. Now we are going to discuss classification of मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. अब अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ, अब बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. नाउ व्हाट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? यू नो वेरी वेल. What is monohydric alcohol? The alcohol whose compound contain 1 hydroxyl group in their molecule and is called as monohydric alcohol. Now student, based on hybridization, the alcohol are classified as, first point, monohydric alcohols are classified as alcohol in which hydroxyl group attached to sp3 carbon. Okay, hydroxyl group attached to sp3 carbon. Now second one, alcohol in which hydroxyl group attached to sp2 carbon. देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. पहला क्लासिफिकेशन क्या आएगा आपका? द अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू sp3 कार्बन एटम, एंड सेकेंड द अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू sp2 कार्बन. अब व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? आपने 11 में स्टडी किया है. व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन? इन डिटेल आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है. ओके, नाउ व्हाट इज sp3 अल्कोहल? व्हाट इज अल्कोहल इन विच hydroxyl group attached to sp3 carbon? So we can say the alcohol या hydroxyl compound in which hydroxyl group attached to sp3 hybridized carbon atom. Hydroxyl group attached to sp3 hybridized carbon atom. Okay, now here I am writing, for example, CH3 single bond, CH2 single bond OH. Now this carbon is called as sp3 hybridized carbon. ये कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? sp3 hybridized carbon. अगर मैं अपने जनरल वे में डिस्कस करूंगा, इफ ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, मतलब ऐसा कार्बन जिसको सब सिंगल बॉन्ड अटैच रहेंगे, दैट इज sp3 कार्बन. कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, sp2 कार्बन. कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज sp हाइब्रिडाइज. अब यहां पर ये जो कार्बन है जिसको OH अटैच्ड है, नाउ दिस कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, so this carbon is sp3 hybridized carbon and this alcohol is called as sp3 hybridized alcohol. इसको मैं क्या बोलूंगा? sp3 hybridized alcohol. Now what is sp2 hybridized alcohol? What is sp2 hybridized alcohol? The alcohol in which hydroxyl group attached to
बॉन्डेड टू, किसको अटैच रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड रहेगा या अटैच रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. The alcohol in which hydroxyl group attached to bonded to sp2 hybridized carbon atom. Example, I am writing here CH2 double bond CH single bond OH. Now when we will observe this carbon, अब ये कार्बन को क्या अटैच्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड. सो डेफिनेटली दिस कार्बन इज, ये आपका कौन सा कार्बन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. And OH attached to sp2 hybridized carbon, such alcohols are called as sp2 hybridized alcohol, and these alcohols are also called as, ये अल्कोहल को अपन क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल. These alcohols are विनाइल अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल और विनाइल अल्कोहल. ये पोजीशन को विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज विनाइलिक पोजीशन, मतलब जहां पर भी कार्बन डबल डबल बॉन्ड रहेगा, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज विनाइल पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन, एंड सच अल्कोहल्स आर नोन एज विनाइलिक अल्कोहल. तो स्टूडेंट, आपको एक क्लियर आइडिया आया what is sp3 hybridized alcohol and what is sp2 hybridized alcohol. sp3 hybridized alcohol में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू sp3 कार्बन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू sp3 कार्बन, एंड sp2 हाइब्रिडाइज में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विच इज अटैच्ड टू डबल बॉन्ड, विच इज अ पार्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अब विच इज अ पार्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब वो काय को अटैच्ड रहेगा, OH अटैच्ड टू कार्बन विच इज अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल आर आल्सो कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल. ये अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, विनाइल अल्कोहल. सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ योर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. नाउ दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल, अब ये जो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल रहते, नाउ दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड. इनका डबल क्लासिफिकेशन होता है. नाउ वन इज योर प्राइमरी अल्कोहल. नाउ फर्स्ट पार्ट इज योर प्राइमरी अल्कोहल. Now next one is your secondary alcohol, next part is your tertiary alcohol. Okay, next part is your tertiary alcohol. Next one is your allelic alcohol. Next concept क्या आता है आप लोगों का, allelic alcohol. Okay, and last one is your benzylic alcohol. Last concept is your benzylic alcohol. In detail with proper example we will try to cover. एक एग्जाम्पल के साथ अपन ये पॉइंट को कवर करेंगे. ना मेरा कंसेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ sp3 hybridized alcohol. So this sp3 hybridized alcohol classified as primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, allelic alcohol, ALLYLIC, allelic alcohol, and last one is your benzylic alcohol. Again this monohydric alcohol, that is sp3 hybridized alcohol, classified into 5 category with one example of each category in detail we will try to cover. Now पहला पार्ट स्टार्ट करता हूं मैं, प्राइमरी अल्कोहल. एक्चुअली दिस क्लासिफिकेशन जो रहता है ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, एक्चुअली इट इज अ नेचर ऑफ कार्बन आइटम, टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम. देखो आप लोगों ने L1 में स्टडी किया होगा, व्हाट इज प्राइमरी कार्बन, व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन, व्हाट इज टर्शियरी कार्बन. नाउ सपोज आई एम राइटिंग हियर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. Okay, now this one is my carbon number 1, this one is my carbon number 2. मेरा क्वेश्चन है, कार्बन नंबर 1 अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन, कार्बन नंबर 1 कितने कार्बन को अटैच्ड है, यू विल से ओनली 1. विच वन, कार्बन नंबर 2. कार्बन नंबर 1 कितने कार्बन को अटैच्ड है, सिर्फ एक, और वो कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 2. या इन रिवर्स वे आई एम आस्किंग, कार्बन नंबर 2 अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन, आप बोलेंगे 1, वो कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 1. ये एक एग्जांपल. नाउ सेकंड वन, सपोज आई एम राइटिंग हियर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन नंबर 1, 2 and 3, and now my question, कार्बन नंबर 2 अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन. अब मेरा क्वेश्चन है कि कार्बन नंबर 2 कितने कार्बन को अटैच्ड है, आप लोग बोलेंगे 2 कार्बन.
one is your carbon number 1 and another one is your carbon number 3. तो ऐसा कार्बन which is attached to one carbon is called primary carbon. Now a carbon which is attached to another one carbon is a primary carbon. तो इसमें ये दोनों भी मेरे कार्बन कौन से हो जाएंगे? प्राइमरी कार्बन. नाउ कार्बन नंबर 1 इज अ प्राइमरी कार्बन, कार्बन नंबर 3 इज द प्राइमरी कार्बन. क्यों कार्बन नंबर 1 प्राइमरी कार्बन है? क्योंकि कार्बन नंबर 1 एक ही कार्बन को अटैच्ड है और वो कौन सा कार्बन है? कार्बन नंबर 2. बट कार्बन नंबर 2 इज अ सेकेंडरी कार्बन. कार्बन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? सेकेंडरी कार्बन. एंड व्हाई इट इज अ सेकेंडरी कार्बन? क्योंकि कार्बन नंबर 2 कितने कार्बन को अटैच्ड है? अनदर 2 कार्बन. वन इज योर कार्बन नंबर 1 एंड सेकेंड वन इज योर कार्बन नंबर 3. सो स्टूडेंट, आर यू गेटिंग द डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन? अगर कोई कार्बन एक ही कार्बन को अटैच्ड है तो उसको मैं प्राइमरी कार्बन बोलूंगा. एंड इफ दैट कार्बन एटम अटैच्ड टू मोर देन 1, मतलब 2 कार्बन एटम्स को अटैच्ड है, दैट इज योर सेकेंडरी कार्बन. ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल आई एम राइटिंग. सपोज CH3 single bond C single bond CH3 single bond CH3 and now what about this carbon जिसको मैंने सर्कल किया. अब ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच्ड है? आप लोग बोलेंगे सर 3 कार्बन्स को. देखो ना, कार्बन 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 कार्बन. सो दिस कार्बन इज कॉल्ड एज, ये कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? टर्शियरी कार्बन. ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन्स आर देयर? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन. अब प्राइमरी में क्या रहेगा? अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू अनदर 1 कार्बन. सेकेंडरी में क्या होगा? अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू अनदर 2 कार्बन. टर्शियरी में क्या होगा? ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन आइटम्स को अटैच्ड रहेगा? 3. दैट इज कॉल्ड एज योर टर्शियरी कार्बन. ओके, नाउ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन, based on nature of carbon to which hydroxyl group is attached, based on nature of carbon to which hydroxyl group is attached. मतलब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH सेकेंडरी कार्बन को अटैच्ड है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी कार्बन को अटैच्ड है. इसके बिना पर वी विल क्लासिफाइड sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल एज प्राइमरी अल्कोहल, secondary alcohol and tertiary alcohol. What is primary alcohol? The alcohol in which hydroxyl group attached to primary carbon. मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको अटैच रहेगा? प्राइमरी कार्बन को. लाइकवाइज से व्हाट इज सेकेंडरी अल्कोहल, व्हाट इज टर्शियरी अल्कोहल? अब मैं सेकेंडरी अल्कोहल किसको बोलूंगा? द अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन. What is tertiary alcohol? The alcohol in which hydroxyl group attached to tertiary carbon. अगर OH प्राइमरी कार्बन को रहा तो प्राइमरी अल्कोहल, OH सेकेंडरी कार्बन को अटैच रहा तो सेकेंडरी अल्कोहल, एंड इफ OH attached to tertiary carbon it is called as tertiary alcohol. And I am writing here examples. Tell me which alcohol is there. Okay, now suppose I have written CH3 CH2OH. Now second one CH3 CHOH single bond CH3. Next one CH3 CH3 single bond OH. Now these 3 different examples I have written. Tell me whether it is primary alcohol, secondary alcohol or tertiary alcohol. Now पहला example CH3 CH2OH. Now OH attached to CH2. OH किसको अटैच्ड है यहाँ पर? CH2. सो दिस अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल. क्यों बोलेंगे अपन इसको प्राइमरी अल्कोहल? क्योंकि OH प्राइमरी कार्बन को अटैच्ड है. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. Why it is the example of secondary alcohol? Because OH attached to the carbon which is attached to another 2 carbon. देखो ना, ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच्ड है? लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में 1. So this carbon is your secondary carbon and OH attached to secondary carbon. This alcohol is known as secondary alcohol. Now here when you will see the OH attached to, अगर आप लोग ये example देखेंगे, OH attached to this carbon. What is the nature of this carbon? Primary carbon, secondary carbon है, tertiary carbon है? इट इज टर्शियरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन आइटम अटैच्ड है? 3. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये काय का एग्जांपल हो गया? टर्शियरी अल्कोहल.
काय का एग्जाम्पल हो गया ये टर्शियरी अल्कोहल. सो होप यू विल गेट clearly what is the difference between primary alcohol, secondary alcohol and tertiary, and all are the sp3. यहां पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं. ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. नाउ ये पार्ट में रफ करता हूं. व्हाट इज allylic alcohol and what is benzylic alcohol? My point is allylic alcohol and benzylic alcohol. अब देखो what is allylic alcohol? Concentrate on my words. Allelic alcohol means the alcohol in which hydroxyl group attached to sp3 hybridized carbon. The alcohol, example में मैं फिर मेरा definition repeat करूंगा. The alcohol in which hydroxyl group attached to sp3 hybridized carbon which is attached to carbon-carbon double bond. अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको अटैच रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को. और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किसको अटैच रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एंड सच अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज allylic alcohol. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर CH2 double bond CH single bond CH2 single bond OH. Now here OH attached to this carbon CH2 and this carbon is your sp3. देखो उधर उसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, चारों तरफ उसके क्या है? सिंगल बॉन्ड. सो दिस कार्बन इज sp3 कार्बन. OH अटैच टू sp3 कार्बन अटैच, बट दिस कार्बन अटैच टू, लेकिन आप लोग ये CH2 देखेंगे तो ये किसको अटैच है? ये CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को. नाउ दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज allylic पोजिशन. ये पोजीशन को अपन कौन सी पोजीशन बोलते हैं? allylic. ऐसा कार्बन जो किसको अटैच रहता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एंड सच अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज allylic अल्कोहल. ये अल्कोहल को अपन क्या बोलेंगे? allylic अल्कोहल. सो व्हाट इज allylic अल्कोहल? द अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप म्हणजे OH अटैच टू sp3 hybridized carbon which is attached to carbon carbon double bond, and such alcohols are called as allylic alcohol. And what is benzylic alcohol? Benzylic alcohol, let me define first the definition, फिर मैं example बताता हूँ. What is benzylic alcohol? The alcohol in which hydroxyl group attached to side chain. The alcohol in which hydroxyl group attached to sp3 hybridized carbon. Side chain जान दो. Hydroxyl group attached to sp3 hybridized carbon atom which is attached to aromatic compound. यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको अटैच रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन. और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किसको अटैच रहेगा? बेंजीन रिंग को. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर बेंजीन रिंग. See here, benzene ring attached there CH2. Now this CH2 is sp3 hybridized carbon और ये CH2 को क्या अटैच रहेगा? OH. and such alcohols are called as, ये अल्कोहल को अपन क्या बोलेंगे? benzylic alcohol. Such alcohols are called as a benzylic alcohol. So see, this is allylic alcohol, this one is your benzylic alcohol. Allylic and benzylic alcohols are also classified as primary, secondary and tertiary. Primary allylic alcohol भी रहता, secondary allylic alcohol भी रहता, tertiary allylic alcohol भी रहता. Primary benzylic alcohol, secondary benzylic alcohol, tertiary benzylic alcohol भी रहता है. तो स्टूडेंट go and read this classification and definition of alcohol from your textbook. अगर आपको आगे का लेक्चर, वीडियो लेक्चर समझना है और ये टॉपिक समझना है तो आपको ये क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है. Actually this is a simple part. Alcohols are classified as monohydric alcohol, dihydric alcohol, polyhydric alcohol. फिर वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्लासिफाइड होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल. sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज विनाइलिक अल्कोहल. Again sp3 hybridized alcohols are classified as primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, allylic alcohol, benzylic alcohol. फिर allylic alcohol classified होता है primary, secondary, tertiary. So student, this is all about the classification of alcohol and phenol. Hope आपको ये part समझ में आएगा. Now in my next video lecture we will see classification of okay, let me finish that part also here. Now rough this pause your video and note down all points. Now I'm going to start within 2 minutes classification of ethers.
My next concept is classification of ether. Now what is the definition of ether? अब ether का definition क्या था? क्या the organic compound in which an oxygen atom attached to two alkyl group or an oxygen atom attached to two aromatic compounds, aromatic ring, or alkyl group attached to one, or oxygen atom attached to one alkyl group or one aryl group. वो definition सबको मालूम. Now ethers are classified into two types. One is your symmetrical ether. एक पॉइंट क्या रहता है आपका? symmetrical ether. And second one is your unsymmetrical ether. एक क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है आपका? सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर. नाउ सिमेट्रिकल ईथर्स आर कॉल्ड एज सिंपल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ईथर. अनसिमेट्रिकल को अपन क्या बोलेंगे? मिक्स्ड. एंड सिमेट्रिकल ईथर्स आर कॉल्ड एज सिंपल ईथर. अब देखो, व्हाट इज सिंपल ईथर? द ईथर इन विच ऑक्सीजन बॉन्डेड टू सेम अल्किल ग्रुप और सेम आयरिल ग्रुप. मतलब ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या रहेगा? सेम अल्किल ग्रुप. जैसे यहां पर CH3 है तो इधर भी CH3 है. अगर यहां इथाइल रहता तो इधर भी क्या आता? इथाइल. कैन आई से इट इज द सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर? नो. यहां पर ऑक्सीजन के लेफ्ट में CH3 है लेकिन राइट में क्या है? CH2 CH3 है. So this one is your symmetrical ether and this one is your unsymmetrical ether. So what is unsymmetrical ether? The ether in which different alkyl or aryl groups bonded to oxygen atom. अगर ऑक्सीजन आइटम के दोनों तरफ डिफरेंट अल्किल या एरिल ग्रुप रहा तो उसको अपन अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे. एंड सेम अल्किल ग्रुप्स आर देयर, इट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल ईथर. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर. होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा. wherever your difficulties are there, you may ask your difficulty. Note down all points, that is classification of alcohol, phenol and ether. Thank you.